दोस्तों कैट 2 वीक स्ट्रैटेजी तो आपने देखा होगा। मैं वही ये जेपी स्टॉल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आप देख रहे हो मैंने काफ़ी टाइम बिताया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये टी स्टॉल है जो कि काफ़ी फेमस है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं यहाँ के बच्चों को मैंने इकट्ठा किया है जिन्होंने कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है, सो दैट आपको पता पड़े कि 1 ईयर कैट स्ट्रैटेजी अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट का एग्जाम लिख रहे हो 2024 में, तो आपको कैसे पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे पूरा 1 ईयर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे मॉक्स देना चाहिए, सब कुछ वो लोग आपको बताएंगे। सो दैट यू नो कि जो लोग एक्चुअली इतने सारे लोग कैट क्रैक करके आपको रियल टाइम लेटेस्ट इंसाइट्स मिले और आपको प्रिपरेशन में मदद मिले। गाइस ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के MBA के स्टूडेंट्स हैं। मैंने बताया हुआ है कि इनका कैट परसेंटाइल एवरेज काफ़ी हाई रहता है और इनका मतलब देव गॉट कन्वर्टेड गुड बी स्कूल्स गॉट वेरी हाई स्कोर। अभी बताएंगे ये लोग, पूछते हैं इनसे इनका क्या परसेंटाइल था सबसे पहले, फिर ये लोग डिटेल स्ट्रैटेजी बताएंगे कोचिंग लिया था कि नहीं लिया था, कौन सा कोचिंग लिया था आपको पता पड़ेगा। मार्केट में बहुत ये है ना कौन सा टॉप कोचिंग है नहीं है। एटलीस्ट ये 1 2 3 4 7 बच्चों का सैम्पल सेट से जो DSE आए तो आपको पता पड़ जाएगा कि DSE के लेवल के कॉलेज में कौन सी कोचिंग के बच्चे आते हैं। इन अ वे गुड सैम्पल साइज बिकॉज देव क्रैक दी कैट एग्जाम। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आपके कितने परसेंटाइल आए थे, क्या क्या कॉलेज कन्वर्ट हुआ था। So I scored a 98.74 percentile in CAT, and I've converted the baby IIMs, Bodh Gaya, Sambalpur, and Sirmaur. परफेक्ट। My percentile was 97.12 and I've scored some baby IIMs and some of the new IIMs. परफेक्ट। So my CAT percentile was 98.59 and I converted IIM Indore and most of the new IIM. My percentile was 97.23 and I converted few of the baby IIMs like IIM Bodh Gaya, Sirmaur and Kashipur. देखो सब 97 के ऊपर है। So my CAT percentile was 95.8 and just like them I also converted a few baby IIMs and Narsi Munchi. My CAT percentile was 98.41. I converted all the baby IIMs. परफेक्ट। My percentile was 98 and I converted baby IIMs as well as new IIMs. सबसे पहले ये पूछेंगे कि कौन से मंथ में इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, राइट, और पहले कुछ मंथ्स का प्रिपरेशन कैसा था। साथ ही ये लोग ये भी बताएंगे कि इन्होंने कोचिंग कौन सी ज्वाइन की थी। Okay, so I started my preparation in February. February. Yeah, and I took coaching from Allied Grid and it was an online coaching. So in the initial months of preparation, it was a very basic preparation. Like in quants, we were only doing very basic formulas in topics, and also in LIDI, we were doing very basic puzzles and arrangements. And VRC also like we were like only the focus was on reading only, not on mocks and any other things. So I started my preparation in February as well, and I joined a coaching which is Funda Makers. It's in Lucknow only, from where I belong. And in the initial months, like for 3 to 4 months, we were just completing the course, completing the curriculum. And I used to study for 3 to 4 hours a day, including the coaching hours as well. It was an offline coaching. And at the later stage, it was around 7 to 8 hours per day, rigorous studies. Perfect. With mocks as well. तो ये जो आप कह रहे हो कि पहले 3-4 घंटे फिर 7-8 आवर्स, ये कब कौन से मंथ के बाद स्पीड अप हो गया। Around August. अगस्त। After August. दोस्तों बहुत अच्छा इंसाइट। पहला बात तो कि फरवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करके भी अच्छा परसेंटाइल आ रहा है। तो जो लोग बोलते हैं नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, स्टार्ट नहीं किया, लेट हो गया, लेट कुछ नहीं है। फरवरी में आपने स्टार्ट किया तो मार्च से एक्चुअली अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, तो 6 महीने में भी कैट क्रैक हो रहा है, 6-7 महीने में। तो ये पहला इंसाइट निकल के आ रहा है। आप ये बताओ कि ऑफकोर्स कोचिंग कहाँ से लिया हो तो बताना आपने। कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल हुआ होगा आपके प्रिपरेशन में। 95 परसेंटाइल जो आया, ऑफकोर्स कौन से महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे रैंप अप किया, और कोचिंग के अलावा खुद से क्या प्रिपरेशन किया। So I started in the month of March. I had prior work experience, so I was preparing alongside that. I did my coaching from Times. They were very helpful. They Which center, provided which city? CP Delhi. You're from Delhi only, okay. Not really, no, but you yeah. still in Delhi, yeah, okay. So they provided a lot of material, a lot of questions and mocks, etc., which were very helpful. I used to study on weekends and then completed all the mocks, analyzed them. Understood. And a center actually plays a lot of role in your CAT preparation because it helps you in clearing those basic concepts and moving forward. So yeah, Now, how did you manage your work, like your job? Tell us where did you work, Gurgaon or Delhi, and then how did you manage this preparation? Because coaching must have been offline, right? Right. So I used to work at Barclays as a senior analyst, where it was a 5-day working program where for 5 days I used to work, and on the weekends I used to study to clear CAT. So the company was very supportive of me completing my further studies, and I used to take out time, separate a few hours so that I could do some mocks and then analyze those and then work on my. So Barclays was in Noida, I guess. Right. Then you used to travel on the weekend. आपके weekend में classes थे बस. Right. Okay. So I used to have the weekend Weekend batch classes. and then cover the topics. And then you used to study every day yourself or only on weekends mainly?
it used to be on weekends, but I used to study every day also whenever I got a few hours to myself. दिस इज आई वुड वांट टू फोकस ऑन हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं तो वीकेंड में कितना टाइम आपने सेल्फ प्रिपरेशन में दिया अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड ट्रैवलिंग? Coaching used to be about 2 to 4 hours depending on the day. Apart from that, 2 hours giving mocks and the rest of the hours analyzing. every Mostly weekend? that. Yeah, every weekend starting from August. तो ट्रैवल में भी 1-2 घंटे चल जाते होंगे. Yeah, it used to take. So basically if you want to crack with work with job, weekend should be completely devoted. आपका 5 day working था तो आपने कर भी दिया था वो. Right, agreed. आप लोग ये बताओ कोचिंग कौन सा लिया, कितना रोल था कोचिंग का, क्या रोल होता है, खुद से प्रिपेयर हो जाता है या फिर? सर खुद से प्रिपेयर आप कर सकते हो. हाँ, आपने कहाँ कोचिंग ली? कोचिंग से और सीएल से लिया था. सीएल कौन सा सेंटर? मैंने रांची से किया. रांची से, ठीक है कोई. हाँ, तो आप कोचिंग से ज़्यादा लेकिन आपको मॉक टेस्ट अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के देने होते हैं. जैसे IMS हो गया, वो सिम कैट करवाता है, टाइम एम कैट करवाता है, और CL का अपना ही मॉक होता है. और इन सब में IMS बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो थोड़ा कैट मॉक्स के लिए तो वो थोड़ा कैट के लेवल का होता है. टाइम थोड़ा कैट से हायर लेवल का हो जाता है. और CL का VARC सेक्शन सही होता है, बाकी थोड़ा सा ये. बहुत बढ़िया इंसाइट्स है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो बन के आ रहा है. इन्होंने बोला कि मॉक्स IMS का सबसे बेस्ट होता है, हालांकि एक ही आदमी का सैम्पल सेट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट आदमी क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आ चुके हैं. और आप कह रहे हो कि आपने अच्छा आंसर दिया कि वर्कएक्स के साथ जॉब के साथ कैसे क्रैक करें, एंड Feb-March के बाद ही सबने प्रिपेयर किया ऑलमोस्ट. सम वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स. आप बताओ कहाँ कोचिंग लिया, कौन से महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट की? I started my preparation in January. ओके. I took coaching from Time. So the center from Bangalore. I took from like online live classes. टाइम बैंगलोर. Yeah, the classes were 3 times a week, 2 hours each. परफेक्ट. कितना रोल कोचिंग का अच्छा रोल था? गुड रोल ऑफ कोचिंग. बहुत रोल अप होते हैं. बहुत ये कह रहे हैं कि IMS का मॉक टाइम से ज़्यादा अच्छा है, आपका क्या कहना है, ये मुझे बताइए आप. मतलब आपने अगर IMS का मॉक दिया हो या फिर आपका टाइम का मॉक का एक्सपीरियंस कैसा था? टाइम का मॉक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट As compared to IMS. And पर डिफिकल्ट है तो अच्छा हुआ ना, फिर एग्जाम में हेल्प करेगा. अच्छा हेल्प करता है. लाइक कैट इज अनप्रेडिक्टेबल. कुछ भी हो सकता है, कभी इजी आता है, कभी हार्ड आता है. इस वाला देखते हैं, ये वाला हार्ड था. लाइक आपने अगर आपको 95% चाहिए तो आपको 110 लाने पड़ते हैं, और वेरस इन दिस वन 60 मार्क्स पे 95% आया. तो मेरे ख्याल से यही होता है, जब कुछ अलग टाइप का होता है ना तो उसका एक आदमी बोलेगा कि बेस्ट है, एक आदमी बोलेगा अच्छा नहीं. तो मे बी यू वांट डिफिकल्ट मॉक्स इफ यू आर सेइंग टाइम इज द बेस्ट मॉक, राइट? एंड मे बी ही वांट्स अ लिटिल इजियर मॉक्स, क्योंकि मैंने भी सुना है कि IMS के मॉक्स थोड़े कैट के लेवल के होते हैं, टाइम के टफ होते हैं. तो मेरे को भी क्वांट के लिए मैं नहीं दे पाता था टाइम के मॉक्स, क्योंकि मैं तो हिल जाता था. तो ऐसा मॉक क्यों दूँ कि मैं फिर हिल जाऊँ, राइट? कॉन्फिडेंस तो चाहिए. तो बहुत बढ़िया. अब मैं थोड़ा फोकस करूँगा कि पहला बात एक और चीज़ मैं बता दूँ डिस्क्लेमर, कि ये लोगों ने Feb-March में कोचिंग स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक सर कह रहे हैं कि Feb-March में कोचिंग स्टार्ट करना, राइट? ऐसे मत करो. मैं तो बोलूँगा अभी स्टार्ट कर दो. बट अगर नहीं भी करते हो, Feb-March में स्टार्ट करते हो, असली वाला प्रिपरेशन हमारे दिल को पता है क्या होता है. असली वाला प्रिपरेशन जैसे मैम ने किया है, इतना वीकेंड स्ट्रगल करके इन सभी ने किया, वो वाला प्रिपरेशन करना है, ठीक है? अब थोड़ा ये बताइए कि कौन से मंथ से मॉक्स में ज़्यादा मेहनत इम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि हर कोई शुरू से मॉक नहीं देता. पहला प्रिपरेशन है तो पहला अटैम्प्ट है, और उसके बाद जब हम मॉक्स को ले आए तो मॉक्स को एनालाइज कैसे करें, और तब नॉर्मल प्रिपरेशन को चेंज कैसे करें कि किताब ना बनाए, चैप्टर्स ना बनाए, वो सब चीज़ें आप बताओ. फाउंडेशन तो आपकी स्टार्ट हो जाती है जैसे आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. 3-4 महीने फाउंडेशन में लग जाते हैं, फिर जैसे एडवांस से आप बढ़ते हैं तो लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वो बेसिक होते हैं. लाइक मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था अक्टूबर एंड से, कैट का एडमिट कार्ड निकलने के बाद से. उस दिन से मैंने मॉक देना स्टार्ट किया, एंड आई यूज्ड टू गिव 2 मॉक्स पर डे. लाइक सुबह उठते ही नहा धो के 1 मॉक दे दिया, एंड शाम को खाना खा के. तो बीच में टाइम होता है सही में 2 मॉक्स पर डे. कौन से महीने से? अक्टूबर एंड से, एडमिट कार्ड निकलने के बाद. तो अक्टूबर मतलब नवंबर में एग्जाम था, लास्ट के 2 महीने, ठीक है? लास्ट के 1 महीना 2 मॉक्स पर डे, ठीक है? और टोटल कितने मॉक्स दिए आपने? 60 होंगे. सही में? और एनालाइज का टाइम तो तब रहेगा ही नहीं. हाँ, वो तो हो जाता है ना. सुबह 2 घंटे हो गए, फिर आपको 8-9 घंटे मिल रहे हैं. 2 घंटे में आपको एनालाइज करना है. लाइक जो आपने गलत क्वेश्चंस किए वो आप देख लो, एंड कुछ शॉर्टकट्स हो जो सॉल्यूशन में हो वो ट्रिक्स देख लो, तो उससे वो फंडा क्लियर हो जाता है. मैंने जून से मॉक देना स्टार्ट जून से मॉक स्टार्ट किया, और पहले 2 वीक में 1 मॉक देता था. उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बड़ी मॉक की. अगस्त सितंबर में 1 वीक में एक मॉक हो गया. फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम आते आते मे बी 1 वीक में 3 मॉक हो गए या 2 मॉक हो गए. उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि सफिशिएंट. तो आपने इतना लेट क्यों मॉक देना स्टार्ट किया कि थोड़ा सा मतलब अक्टूबर में? मैं तब तक कोर्स कवर कर रहा था आराम से. लाइक अच्छा, फुली एडवांस क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, अपना कंफर्टेबल हो जाए बंदा टॉपिक से. तो इससे ये इंसाइट निकल गया है कि जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा दे दो तो बेटर है. यू डिड नॉट लीव योर जॉब until CAT. So you only had 2 days for in a way mocks. Right. How did you manage? So the first mock I gave was when I started the preparation itself. I wanted to see how the paper comes and how I should strategize everything. Apart from that,
I used to give mocks on the weekend every day on both the days, Saturday and Sunday, and then analyze in the week ahead. So I would say giving When did you mocks start? Which is- month you started mocks? on the very first day itself. Acha, uske- the okay, wow. the frequency was less in the starting, but after that I used to give it religiously. Analyzing mocks is a art, and I think a CAT aspirant should be very good at doing that, because at the end of the day you only have 2 hours to sell yourself and get the perfect score. Perfect. So at the end you can start giving mocks religiously and then analyze them. One question I'd like to ask from you, because you had probably lesser time than all of the others. I'm sure you must have focused only on CAT until November. Right. Did you take all the other exams as well, like NMAT, SAT? Yes, I sat for NMAT and ZAT and TIS also. And then when did you start focusing on those exams, like mocks? So personally for me, once I had completed CAT, after that I preparing for ZAT. Because it's the same level of same questions Right. actually. Well, in my opinion, we should start giving mocks since around July and August. And initially, frequency agar kam rahe, like one mock per day or in 2 days, that's fine while completing the curriculum. And as the time goes by, like in October, November, you should increase the volume of the mocks that you give per day. Like 2 mocks would be good. And if you are able to give 3 mocks per day, then that's very nice. 3 mocks per day. Are you sure? Have you ever given 3 Yes, mocks I per day? gave around 3 mocks per day in the last 15 days. तो ये निकल के आया, मुझे लगता है बस यही आंसर है. अगर आपको टॉप भी स्कूल जाना है तो एक से ज़्यादा मॉक. आई हैव नेवर गिवन मोर देन 1 मॉक पर डे. Okay. मेरा तो बिकॉज मुझे लगता है कि दूसरा मॉक में मेरा दिमाग फ्रेश नहीं है. बट इफ़ यू गाइज आर सेइंग दिस, इफ़ यू कैन मैनेज, मे बी दिस इज ऑल्सो वन की. And one more important thing while analyzing the mocks, which students don't do, जो questions वो attempt नहीं करते हैं वो फिर उसको देखते भी नहीं है analysis Understood. में. बस वो देखते हैं कौन सा सही किया and कौन सा गलत किया है. And फिर वो वाले waste चले जाते हैं तो questions. आपने फिर एनालिसिस भी करते थे? analysis like एक day mocks दिए, next day थोड़ा सा ये analyze कौन से महीने से 2 मॉक्स पर डे हो गया था? around September end. तो मैं बस घंटा समझना चाह रहा हूँ एक दिन का. ऑनेस्टली बच्चों 2 4 फिर एनालिसिस भी 4 आवर्स का हो जाएगा. 2 mocks like morning में उठ के आपने 1 mock दिया, फिर एनालिसिस. फिर एनालिसिस किया, देन ब्रेक ले लिया, देन रात में 1 मॉक दिया. एंड अगर लाइक इफ़ यू हैव अ फ्रेश माइंड तो आपने उसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया, वरना नेक्स्ट डे. Yeah, so according to me, same. The mocks should be started in August. I started giving mocks in August, and the frequency was like 1 per week only. And I was focusing more on sectional mocks, because where you are weak, like I was not much good in VERC, so I was giving more sectional mocks in VERC. And from October, I was giving full length mocks, almost 1 per day. And that was actually needed, but what I have seen is most of the students don't analyze the mocks. They just give the mocks and leave it, and that is totally useless, because if you don't analyze, you won't know where you won't actually improve. So I was focusing on analyzing the mocks, and when I shifted to November, so in November I started taking 2 mocks per day, but that was not working because I was not analyzing them. So I actually 1 mock per day is moved what you would on to suggest, and yeah. I was analyzing rigorously. Okay. That was Analyzing. my mantra. Your focus was more on analysis. Yes. Sir's focus was more on taking the mocks. But anyway, both of these are preparations. So Yes. different strategies for different people. What suits for you, you have to find out. He mentioned before the video that you completed CAT preparation 1.5 months. 2 months actually. 2 months. So 2 months में अगर किसी को करना है, किसी का छूट गया पूरा ट्रेन, तो वो कैसे करते हैं आप थोड़ा बता दो और मॉक्स का ही बता दो, कोई बात नहीं. So I had a prior experience in CAT. I had given CAT Achha. last year, so that kind of helped definitely. But in 2 months, I would suggest focus on your strong topics, because there is not much time, obviously, and CAT doesn't demand that you have to do all of the things. There is negative marking, so you have to focus on your strong topics, especially in DILR section. You have to get very good on set selection, for which I gave sectional marks in the DILR section, and in the end, I would obviously suggest that giving 1 mock daily. That's what I did in the whole 2 months. Analyzed it and focused on my strong topics. That's what I did best, and that's how I got. I had very less negative marking in CAT. Okay. So what I did, Accuracy. I had very good accuracy. So that's what I suggest in the last month. So since I started my preparation in September, I started with mocks, and in the very first mock, I could only score 55 percentile. And from there on, I used to give CAT mocks once a week, and I take 2 days time to analyze them. And for the rest of the days, I would focus on the areas where I was missing out or I was making mistakes. And apart from that, for VARC, my focus was solely on RC, as they are the major scoring section.
for DLR, I came to know that if I could accurately select 2 sets, then I could score a 99 percentile. And for quants, my focus was on arithmetic. As the time was very less, so I focused on arithmetic. अमेजिंग आंसर्स। मैं अगर सच बताऊं, मुझे क्या लग रहा है, अगर कोई कॉलेज जैसा DSE या कोई और अपना यूट्यूब चैनल बनाए, लोग ये सब इनसाइट से हमारे चैनल मर जाएंगे। वेरी गुड इनसाइट यू मेंशन, बिकॉज दैट द पॉइंट अबाउट RC इज स्कोरिंग सेक्शन VA से ज़्यादा, दैट वाज अ वेरी गुड इनसाइट। आपने बताया कि मॉक्स ज़्यादा दो, आपने बताया एनालाइज करो, मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट पीपल, इधर टेक मोर मॉक्स और टेक लेस मॉक्स, बट एनालाइज देम इन अ बेटर वे, कि कम में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा हो। एंड आप सभी ने बताया, आपने बताया 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपने बताया जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप यू ऑल गेट द बेस्ट प्लेसमेंट्स। स्टे सेफ एंड टेक केयर।